thank you, everyone again. Thank you, officers from the government departments. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग समय निकाल कर आज यहाँ पर आए. I was here in Zambia few months back, and we had a beautiful program with the Honorable Prime Minister to honor Professor Brijlal, who was from Zambia. And we obviously had two very interesting and historical events in the country recently. We had the Girmit celebration for the first time in the history of this country under the leadership of our Honorable Prime Minister. Girmit Day is now a national public holiday. Like Diwali, Prophet Muhammad, Christmas, Girmit Day is going to be a national holiday every year. जब हम अपने पूर्वजों को याद कर सकेंगे, उनके इतिहास के बारे में बात कर सकेंगे और देखेंगे कि हमारे लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो that is a very significant event. We also had another very significant event, that's the restoration of the national holiday for Ratu Selala Sukuna, one of Fiji's greatest statesmen. And both events were bringing people together. We had a reconciliation where the Methodist Church leaders apologized, and it was such a moving event. So as a government, what we are trying to do is to remove the fears, bring people together, create an environment where people can live peacefully and the country can progress and we can resolve issues. So this budget that we are now formulating is going to be an important one for two reasons. First, we have come out of COVID, we've come out of a very depressed economy, we've come out with a situation where our debt level is very high, where our hospital services, where our infrastructure has a lot of gaps that we need money to fix. But before that, I want to correct मैं ये जो गलतफहमी, झूठ और साज लोग अभी भी बोल रहे हैं, these rumors and false information and lies that is going around. The first one is, some of it happened before the election too, that new government will take away people's social welfare. New government will take away students' fees. Students will have to start paying fees again. यही सब बात तो होता था. And that students will not get scholarships. कि scholarship नहीं मिलेगा. And some people are already saying, and older people are very anxious, they are worried. You know, people in the West ask me, say, will the social welfare be taken away? I said, you know, हमारा दिमाग नहीं खराब है कि हम लोगों को जो मिल रहा है उसको ले जाए. You know, we are not stupid. So I want to make this very clear, and I'm doing this before talking about the budget because it's important that we clear this misinformation.
Nobody is going to take away benefits that people are getting. In fact, when we started government, first thing we did before the school opened, we looked at $50 million. We identified $50 million and we decided to give $200 each to every student from preschool to high school so that they can buy bags, books, uniform, pencils, lunch boxes. $200, 214,000 students throughout the country, and I'm sure all the students in Tabia would have got $200 each. So that is the first thing that we did. First month, we didn't worry about this an election time or whatever. We said this is what people need, and we did that. So what I want to say is, if there is anything, social welfare will increase. It will never go down. We want to also look at our older people, people who are over 70. How many of you, any over 70 here? One. Baba is there. He's the only one in Tabia. There are very few people over 70. They've saved the country very well. We probably want to give them a little bit more than those who are between 65 and 70. But none of these benefits, of course, some people were missed out, some were getting who shouldn't have been getting. For sugarcane farmers, we made sure that the $85 guaranteed price was honored. Because in the last 3 years, $13 million was not paid. There was a shortfall. Last two payments, $24, $7.11, that has taken the price to more than $85. And you got one payment left. So we are thinking about sugarcane farmers, we're thinking about those who are living below poverty line, we're thinking about students. The TELS debt was 613 million. Students from Tabia, poor background, they go to the university, after studying, come back with $30,000, $40,000 loan on them. We're going to write off all that loan. Take out that burden from the parents and the students. We are all going to use the same money that were given as loans to provide scholarships into different areas so that we can plan better. So that's our plan. Now, the budget. Budget, we have to create a fine balance. We have to raise some revenue. Some taxes will go up. Some people will have to pay more. Because if we don't get enough money, we can't give enough. Look at the health facilities. Whether you go to Lambasa Hospital, or you go to Sayanga Hospital, or you go to Draketi, Lakutu, Wanikoro. Last time when we went to Wanikoro, the X-ray machine was not working for 3 months. We went to Draketi, the health center was falling apart. We've now fixed it. In the last 2 months, that health, Draketi, small things can be done quickly. So we are looking at it. Not every problem will be solved tomorrow. कल सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा. It'll take time. Some will take 6 months, year. Small problems can be solved overnight. But roads, water supply, electricity, health facilities, road, this will take some time. But what we are trying to do is to make sure that we allocate enough money, raise enough money. We don't want to just take more loans. We still have to take some more loans, but we want to
progressively reduce it. It's already very high. Because if the more debt is there, the more you have to pay. Nobody else will pay. It's the people who will pay eventually. In taxes, so that जाकर खरीदोगे सुपरमार्केट में आप लोग भरते हो. So everything is paid by the people. Government's job is to make sure that we provide you. You people work hard. Nobody brings food into your house. You work hard. You look after your children. You know, and you feed. As farmers, you feed the people. So our job, government's job, is to look after you, support you in your health, in your road, in your water, in your electricity, your children, schools. And we want to open up, free the people, so that you can bring back your festivities in the school. If government is giving grant, that will continue. But before, there used to be annual bazaars. People come together, raise funds, do something more. Everybody wants to contribute. So we are going to open that up. So that's what we're going to do in the budget. On VAT, there are 3 rates now. There is, in 2011 to 2016, there was only one VAT rate, 15%. 15%. Then it was changed from 15 to 9, and then it was changed to 0, 9 and 15. So right now there are 3 rates. So what we are looking at is not to have 3 rates, maybe 1 or maybe 2. We are looking at it. If we raise the VAT, if we get more money, we give more to the people who deserve more. Farmers, social welfare, put more money into the health, so that those who cannot, people like yourselves who cannot afford insurance, you go to the hospital, you get the services. And our rural people need all that facilities. So we have to balance between a budget, revenue, expenditure, debt, and see how best we can. Because there is not enough. Nobody has enough. So whatever we can get, we'll have to spend wisely. The other thing is we will cut down on wastage. We have already decided as a government that the Prime Minister, all of us as ministers, our allowances when we travel is very high. We get a lot of money. You go overseas, you get a lot of money, allowances. We want to cut that down. It's a small example, but we want to cut wastage as well. And we're talking about millions of dollars, not 500,000 for Girmit, or that some people think, it's too much. It's a small amount of money. But we're talking about millions and millions of dollars that were wasted before. We want to cut that down so that we can improve the services. So that's what I want to hear from you is, I know there are individual concerns, a lot of concerns about farmers, about subsidy, about price. We, for sugarcane farmers, we have made sure the forecast price of $70 is probably one of the highest. That's not the final price. If the forecast is 70, the final price could be, more than 85, close to 90. I don't know. But it's quite high. Right now, for the last season, it's already over 85. And one payment is left. So, thank you. Kamal, we open up the session. आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हो, सलाह भी दे सकते हो. सवाल की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है इस इलाके में, कहाँ पर समस्या है, and what are the issues that you want to be raised. Thank you. धन्यवाद मिस्टर महोदय. थोड़ा मैं बोल दूँ आपको कि जो हमारे गांव दक्षिणी मोतोया इलाका में ये बत्ती का व्यवसाय नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, और चारों कोना पे बत्ती लग गई है.
हमारा ग्राम में नहीं है। 19 हाउसेस है जोन है अभी फिलहाल सभी हो ही गए, सब कुछ हो गए, लेकिन अभी ले कुछ भैंस नहीं। और आई थिंक बस बोला बोल डिस्ट्रिक्ट स्कूल यलाबा देखो नहीं मत है। और कुछ हेल्प हुआ है वरना मैं जो पिछले गवर्नमेंट रहा उसके माध्यम से कि जो यूरोपियन यूनियन कुछ लाकर के 16 बिठा दी ना, तो 11 घर पे लगा और 8 घर पे छोड़ दी। तो जो न जिससे घर पे लग गए वो लोग हंसे हैं, और जिसके घर पे नहीं लगा वो कहाँ से होगा, अभी हमारे घर पे नहीं लगा ना, तो हम लोग अपन लगा हुआ है। जब बैटरी फिट हो जाए तो टॉर्च के जो है वही लेके दौड़ो, कुछ नहीं मोबाइल है यही इस बारों वो काम पे आवे ना। और दूसरा चीज़ है कि हमारे गांव में पानी नहीं, पानी के बहुत दुख है। और जो वोटा कट जो आता है इनके पानी के, तो 2 हफ्ता में ला के भरे हैं 2000 लीटर, तो कहीं नायक मिले है कि नहीं मिले है ना, तो ऐसे बात तो बहुत दुख हम लोग के है। और ये जो रास्ता हम लोग के मेन रोड है व्यापारी रोड, ये बहुत नाजुक है इससे। और एक जो चढ़ाई है उनके, तो वहाँ पर कोई लोरी वाला आए नहीं मांगे है कि गन्ना नीचे बोली बहुत बड़ा चढ़ाई है, हम लोग नहीं करना में उतना गन्ना नीचे आए। अगर वहाँ कमती लोड आए 10 टन से जो नीचे है तो उसका रेट भरे पड़े 10 टन से ऊपर, तो हम लोग के जेब से भरो उसके रेट, तो वो आवे इस पर गन्ना नीचे वास्ते। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप शायद हम लोग के प्रॉब्लम को कुछ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। थैंक यू। Naka Bulabinaka Biman. Okay. Welcome home. Firstly, we congratulate you for the advancement so far, personally, professionally, academically, and politically as well. It's an honor for us to meet you today. We have spoken on the phone a few times, but we haven't met. Firstly, I just would like to take a few minutes in addressing or giving some my suggestion on the overall attempt in the industry to bring up the current sugarcane crop. Well, previously we've had this assistance that has been given through the previous government. I'm thankful for that, and in your setup that I think you've been battling there for nearly 6 months now, but we are very, very thankful for the progress so far. What I would like to point up this afternoon, maybe 1 or 2 or 3 points. This is in regards to getting the crop back. Initially we used to be around 4.2 million tons of cane. We are now about 1.8, 1.6 around there. I would request that this continuous assistance for land preparation for farmers to continue, but to be done in a better way. In a better way, I mean the way it's handled, and especially on the monitoring part. That's my emphasis this afternoon. Like when grants are given to growers, the people who monitor this, they must ensure that whatever is given in as a grant, the product that comes out must be relative to what is given in. It is no use giving $1,000 per acre and then you get 20 ton out of that particular 1 acre block. So the policies, guidelines, implementation of the monitoring services, whether it's FSC, Growers Council, or the government, it must be done well. I think we need a lot of honesty in this area.
Because if government pours in money, it is only sensible, prudent, that the farmers who are using it must give the results back. Starting right from land preparation, fertilization, and all the activities that go through, I would suggest that policies and guidelines to make sure that these things are done well. And that is to be monitored right up to when that cane crosses the weighbridge. It is only when that cane crosses the weighbridge that it shows the tonnage and the improvement. So this is an important area that we need to look at. I was part of the National Adaptation Strategy for Sugar when I worked with European Union people. It was taken off, as you know, in 2006 when the coup happened. I think about 300 to 400 million was taken away. I was part of that. I was seconded from FAC to be in the team. And we just initially started when it was removed. I think Ross McDonald was at that point at the helms of FAC. So the grant is what we are looking at, and the management part actually of this, if it's done well, I think significant. I asked the last government in one of their meetings, I just asked Bainimarama and Inia Seriratu at that point in time, you have poured in, I think, nearly $500 million assisting in every way in sugar industry. Where has the money gone to? Because your crop seems to be sitting down at stagnating at 1.6 and 1.8 nationally for the 3-4 months. So that's I think the major point that I would like to put in, that whatever assistance is given, it must be scrutinized, done properly, so the results actually come out. And I suggest maybe it would be also prudent that the commissioners, Commissioner Western and Commissioner Northern, have somebody in place who can monitor and review FSCs, what is being done. For example, we started the mill 2 days ago. I personally would have told them to start at the end of this month. We would have studied the climate track for the last 2 months. And we would have noted that the amount of rainfall that has been into the country, I know that we cannot really predict, but we should come to some reasonable time when we should start. They have started yesterday, I think. I think they are going to start and stop for the next nearly 3 or 4 weeks. And that is paying people to come and sit down in the mill for every single hour that they sit down. So I suggest, this is my suggestion, you have a monitoring team under the commissioners who can go in, whatever they plan. I think all the activities being done in the mill or outside the mill, they've got an objective. When they set out the plan, it must be monitored. I think a guy from Commissioner's office can have a look at that and then ask them at the same time. DPM, I think it's very silly when we try to review the operation at the end of 6 months. I know, because I was part of presenting information to government. It's important that we monitor along. As we go along, we monitor along. I think you raised the point. Yeah, so I think this is a national, I'm taking any personal thing, it's a national importance. So if that is monitored properly, I think we can have, at the same time we can ask, if they're saying we are going to crush 7,000 this week, if it's not done, why? Who? Reasons. If not, 6 months down the line, we put a report and file it under the. Thank you very much. No, I couldn't agree more with you on some of those issues. In fact, we need to ensure, and one of the things that we are going to do is to do that monitoring. We want permanent secretaries. We want CEOs of organizations to get onto the ground to do appropriate implementation. A lot of money has gone to waste because of bad management, because of failure to monitor projects,
and the quality of projects at the end of the day has been. So you're absolutely right. If the implementation and the monitoring is not done, even if it means planting grant. I mean, you're right. If the farmers are getting planting grant and you're not increasing your cane production, it must be something wrong. So maybe we need to look at how we can incentivize. If somebody was suggesting in the West that we should give the grant as loan. If you produce that much, then it's converted to grant. If not, then that's a loan that you've taken which you have not used properly. So these are things that, because the idea is to increase production. Because if there is a good production level, that will help every other aspect of farmers, services, FSC, income. But if the cane is not there, the whole industry is not there. So that's why we want to focus on the farm level. We want to encourage the farmers to not only work hard but also work smartly, good practices, and we want to support them. The other rumor is that all these subsidies will be taken away. That's also not true. Thank you. अभी भाई मित्र लोग, आज एक खुला मौका हमारे जीवन में है और अनेकों धन्यवाद है कि आज के एक मौका पे हम अपनी बयान मिनिस्टर साहब तक पहुंचाए। छोटी सी है कि हमारे लंगेरी, तांबिया, नुकनुक, अलावा, दक्षिणी मोतो जितना धान के किसान हैं उनके लिए मैं मांग कर रहा हूँ। जैसे भूतकाल के सरकार रहा, काफ़ी मदद हो रहा, लेकिन हम मांगते हैं कि जो अभी के वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सरकार में, वो आवे हमारी गांव में देखे कहाँ कहाँ विलेज चीज़ नहीं बना, हम लोग दिखाएंगे उसके। और हम उड़न हो बहुत बड़ा खारा पानी आवे है, 3 फेरी बना और नहीं बन के रेडी हो पाई। हमारे गांव में बहुत बड़ा धान के किसान है और बहुत बड़ा धान हो सके। हमें मांग करी तो मिनिस्टर साहब से कि वो जाए कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के भेजे, हम अपने गांव में अनुकूल धान पैदा कर सकते हैं। और होता था, लेकिन अभी 2 साल से खारा पानी बहुत ज़्यादा चढ़े, उसके निवारण नहीं हो सका। तो मांग है और अनेकों धन्यवाद है भाई लोग जो थोड़ा समय आए। मिनिस्टर साहब के बहुत धन्यवाद, उनके साथी के बहुत धन्यवाद। मैं तो इंग्लिश नहीं जानता हूँ, पढ़ा भी नहीं एक को रोज हूँ, लेकिन गांव के कुछ लोग चुनिंद हैं, उनके साथे मैं हूँ। और सब कोई अपने हृदय से गहराई से जो सरकार हमारे सामने है उसके तालियां बजा के यहाँ से धन्यवाद दे। तालियां बजा दे भाई लोग। थैंक यू, धन्यवाद। सबके राम राम। मैं सरिता देवी बात करती हूँ और मैं अपनी ज़मीन के अलावा कुछ प्रश्न डालना चाहती हूँ। मैं सरिता देवी बात करती हूँ। मैं अपनी ज़मीन के अलावा कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं बीते साल मई 2 के एप्लीकेशन करी थी, अभी तक वो लोग कुछ हमें नहीं बताए हैं। जब मैं जाती हूँ तब वो लोग बोलते हैं कि हम कॉल करके बताएंगे, बट कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह कर, हमें बताते हैं कि ज़मीन पे इशू है बट कुछ करते नहीं हैं। कौन सी जमीन के इशू है भाई? एक्सपायर्ड हो गए हमारी ज़मीन जुलाई में, बट हम मई में एप्लीकेशन करा रहा, बट बताए लास्ट ईयर एक्सपायर। लास्ट ईयर, हाँ, और लास्ट ईयर मई 2 के हम एप्लीकेशन करा रहा। तो कहाँ पे है जमीन? तांबिया।
ये टीएलटीवी के कर्मचारी है. थैंक यू ऑफिसर, इफ यू कैन हैव अ चैट विद हर. हाँ. Oh sorry, you're the manager. Sorry, I didn't get your name. Mese, बिना का Mese. Mese बहनी मैनेजर है टीएलटीवी के यहाँ लंबा सा. वो आपसे भी बात करिए. अच्छा. भाई कुछ सवाल हमारा रहा आप लोग के बीच में. ये लंगेरे रास्ता जो है, ये गन्ना निकाले रख के तो फिलहाल नहीं है, फिर मिल तो चल पड़ा है, तो इस पर आप लोग कुछ कीजिए. अगर यहाँ से लेके बुला बहु स्कूल तक ट्रांसिट हो जाए तो बहुत अच्छा बात रहा. और दूसरा बात है, आपने वादा किया था गन्ना का जो दाम था $100 प्लस, आप जो कर दे तो बहुत बड़ा धन्यवाद होगा. वादा हम कर रहे 2018 इलेक्शन के समय, और हम लोग सरकार में नहीं गए, तो वो वादा उस समय खत्म हो गया. 2022 में हम लोग कुछ वादा नहीं किया था, लेकिन एक वादा हम किया था $85 2014 में, वो अभी है. और अभी तक हम लोगों ने $85 13 मिलियन आप लोगों के पैसा पिछले 3 साल में नहीं मिला. $85 पूरा नहीं हुआ था. इस बार हमने $85 से ज़्यादा किया है, और अभी एक पेमेंट बचा है, तो ऊपर जा रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आईजी साहब और उनके साथीगण. मेरा नाम बलबीर सिंह है, और मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करने जा रहा हूँ अपने गांव के प्रति. हमारे गांव का एक समस्या बहुत दिनों से है, ये पिछले से कई सरकार बन कर भी चले गए, वो आज तक नहीं किए. जब मैं बीते साल सुबह गए थे तो बुनिमोनो कम्युनिटी हॉल में सैयद कयूम से ये सवाल ओपन डिबेट में किया था कि हमारे गांव में तांबिया में पानी तो है, लेकिन दूर दूर जगह जगह पर है जो सेल्फ प्रोजेक्ट के तौर से चलता है 15-16 आदमियों के बीच में, जो वो भी अच्छी से नहीं चल रहा है. मोटो पानी जो है पंप में नहीं अच्छी से ढकेल रहा है, एक समस्या. और ये जो तांबिया हाईवे रोड जो लोकेटेड है, ये तांबिया केवल तांबिया नहीं है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी गांव है. अगर इसमें जो गिनती करे तो शायद 2-3 पेज भर जाएगा. और वही पानी के लिए जो समस्या हमारे हमारे पिताजी, हमारे कितने गांव के संबंधी जो आज मृत्यु हो गई, उनकी कुएं के पानी से पी कर नहा कर चले गए. हमारे काका प्रमोद जी अच्छे से जानते हैं, मेरे पिता नंजू जी. और जब मैं इस कंप्लेन दिया था, सैयद कयूम ने नोट किया था अच्छी तरह से, फिर मुझको बुलाकर बैठाकर पूछा कहाँ तक पानी लगा हुआ है अच्छी तरह से. हमने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट मीटा प्रोजेक्ट वोटा चाहते हैं, जो गवर्नमेंट मीटा से चले, वही पानी चाहते हैं. उसके लिए कई बार वे बतलाए कि हमें बिना वोटा से कोरोवीरी लेजोनिया कौन वोटा से बोले से कनेक्ट करके लाएंगे. अभी वांगिली 100 मील तक पानी है, और ये तांबिया कॉलेज यहाँ पर जो भी बोहोल से चल रहा है मास्टर जी, यहाँ भी बोहोल चल रहा है. देखिए इतने बच्चे यहाँ हैं, और हम लोग ग्रामवासी पानी से बहुत दिक्कत काट रहे हैं. हमारे आंगन में कुआं तो है, शायद आपके समय रहा तो आकर झाँक लेंगे. और ओटा पंप जो मोटो वो लगा है, उसी से हम पानी ढकेल कर टैंक में चढ़ाते करते पानी घाम के समय गर्मा जाते हैं, है ना. और जो स्त्रियां हैं उनको कपड़ा धोने में, भोजन पकाने में पानी सही तो से नहीं मिल रहा है. और कई स्त्रियां जो है हमारे पड़ोस में कई बार नाले में जाकर नहाते हैं. तो ये सब बड़ी समस्या है, आज तक हल नहीं हुआ है.
जब तो जो फिजी सरकार वो तो आज बीच में नहीं है, चला गया, तो हम तो अब अच्छा से ध्यान लगाए हैं, अच्छा से ध्यान लगा लिए हैं कि हमारे मिनिस्टर बिमान जी कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में कई वर्षों तक जब लोग तो कहते थे कि मैं अपने कानों से सुना कि बिमान जी किस तरह से हमारे जनता के लिए भूख रहा है पार्लियामेंट में, किस तरह से बोले लड़ रहा है, बोले जो आएगा पावर में तो कुछ कर दिखाएगा। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप जो इतने दूर के फासला में पानी 1 मीटर सिस्टम लगा देंगे तो आपका नाम उस कोटि भगवान की तरफ से बहुत आशीर्वाद होगा। हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हम तो 60 भी हो गया, आजकल जीवन का कोई तौर नहीं है, पैसा कौड़ी तो आना जाना लेना देना चीज़ है। सरकार चल रहा है, अब नहीं चाहते हैं कि सरकार के सब पैसा हम जनता छीन खाए लें, उससे नहीं होगा। हम लोगों को मेहनत भी करे पड़ेगा, मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन केवल पानी हम लोग अपने से नहीं लगा सकते हैं। धन्यवाद। हम भी काफ़ी दिन पानी हिंचा कुआं में से रखे थी में पूरा बात मुझे पता है, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि सरकार का काम होता है बत्ती, पानी, रास्ते, अस्पताल, स्कूल, ये सब सुविधा। मेहनत तो आप लोग करते हो, हमारे बाप दादे भी कभी हाथ नहीं पसारे थे, मेहनत किए थे। सरकार का काम है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। He was talking about the water supply. So what we have is there is a plan to connect from Wangili sawmill to Tabia, and Mr. Gounder, who is my head of strategic planning, he is telling me कि वो प्लान बना है, वो पिछले सरकार के समय, और ये सही है। एक सरकार प्लान बनाता है, कभी पूरा नहीं होता है, दूसरा का काम होता है वहाँ से आगे ले जाओ। तो हम लोग कुछ ऐसे जो ऐसे नहीं कि सभी कुछ हमें बदलना है, कुछ जो हुआ है उस पर हमें सुधारना है, उसको आगे ले जाना है। रातुमारा के समय जो बड़ा बड़ा अस्पताल, रास्ता, इरिगेशन स्कीम सयांगा बना, राइस स्कीम उसके समय बना, रंबुका के समय वो रास्ता बना सैबो से रकेती तक तहसील हुआ, वो रास्ता आज तक उसी तरह है। तो अलग अलग सरकार जब आता है तो हमारा ये ख्याल है, वी वांट टू बिल्ड ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन डन। सो देयर इज अ प्रोजेक्ट, it's been costed, I think it's about $25 million. तो बत्ती पानी का जो समस्या पूरे फिजी भर में, मैं बताऊं, सुबह में it's a big problem. We are almost looking at $1 billion to fix water infrastructure not only in Suva but around the country. And so, but this is important. I think Banua Lebu, we have a tourism project that we are about to sign. It's almost complete, close to about $90 million that will upgrade Lambasa Airport, Sabsabu Airport. ये कॉरिडोर में भी जो फाइबर ऑप्टिक्स है, टेलीफोन, क्या नाम उसका, TFL, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट भी बनवा लेबू में हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि लिंक हो सके। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। तो ये सब योजना और जो टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये लगभग बन गया है, हम साइन करने वाले हैं। अभी जब मैं वाशिंगटन में था, कोरिया में था, तो वहाँ पर इस पर फिर से बात हुआ और लगभग अस्पताल के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ मेजर 100-bed सुपर स्पेशलिटी।
जैसे अभी लोगों का हार्ट ऑपरेशन, people have to go to India. People from other Pacific, India has offered to build free a 100-bed super specialty hospital, जहाँ पे भारत के लोग इक्विपमेंट इत्यादि वो भी लाकर चलाएंगे और थोड़े समय के लिए, to build state of the art hospital. तो बाहर देश से भी there is so much confidence that's there now. Our international partners, donors, they all want to help. And what we are looking at is ये जो बड़ा बड़ा चीज़ है, रास्ता, बत्ती, पानी, पुल, ये हमारे योजना में है. ये कल नहीं शुरू हो जाएगा भाई साहब, 6 महीने में नहीं होगा. कुछ ऐसे चीज़ें जो समय लगेगा. अब ये 4 वर्षों में, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जिंदगी भर ताकत में रहेंगे, ये सोचना भी नहीं चाहिए हमें कभी. आज हैं, कल हम नहीं रहेंगे. तो ये 4 साल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ये कोशिश रहेगा, हम मेहनत करेंगे कि जितना हो सके जो प्लान में है, जो बन सकता है, जो बड़ा है, उसको हम करें. We want to do as much as we can. And we understand कि Banua Lebu, people have been saying that Banua Lebu was always neglected, which is true in some sense, which is true. And we want to focus more on Banua Lebu, not that we will neglect other parts, but there is huge potential for growth in Banua Lebu. And there are a lot of things that will happen. So, ठीक है, we'll take note of that, और उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 1 या 2 वर्षों में कम से कम वो पूरा सिस्टम बन जाए. Thank you. Thank you, sir, for coming to our school. As people of this area know very well that everywhere in Lambasa or Suva, Bitlevu, the road condition is very bad. But I am concerned about my area here, Langere Road. As you enter, you just see the road there, see. The sugarcane drivers, and they are not willing to bring the cane that way. So it should be noted. And another thing, today I saw, say, I don't know what happened to the contractors of grass cutting. Today they were rushing from Walebu to up here. They were in a big rush. Oh, minister is coming, I think. This is my point. The minister is coming. Why not before? Are they making money or what? So, road condition is very high, bad, say. You can just see. Thank you. No, we are aware. I tell you what happened. When we came into power in December, most of the money, whole year's budget was almost spent by FRA already. So we allocated some more money and in this budget, which will be delivered on the 30th of June, from August there will be more money available. We are trying to bring PWD back. Jess, Mama, if PWD was there, that road won't be like that. Some of you who are older people remember when PWD was there, the drains were clean, the grass was cut. Never mind, they started work at 9. The work was done. The road was okay. So we want to bring PWD back so that people, could be employed, but also they can fix a lot of these rural roads. And we've got a very good FRA board now. There are some good people. The minister is a very good man, Honorable Philippe Tuisao. He is looking at that,
and he wants to make sure that the rural roads are fixed properly. So that's what we plan to do. But thank you for raising it. Welcome to Tabia College. Firstly, I want to thank you for choosing this venue for the consultation process. I have two issues regarding in this community Tabia. First, brother has already mentioned regarding the water issue. I think it's very important to have water as we are suffering without proper supply, government supply of water. So I think there are about 100 plus families from Wangele sawmill till here, even to this school. Even the school is using the borehole water. So I hope say you will look into that. And second issue is that regarding harvesting, especially it's difficult to get the laborers nowadays. I think all the farmers will agree with that, especially on the sloping land. So I hope that you could look into that and maybe get a harvester that can harvest in the sloping land. We had a consultation process, not consultation actually. The previous government came in Movo at Mr. Vijay Prasad's place. I addressed that issue regarding water, and someone addressed about these laborers. But that time Mr. Reddy was there, but they did not pay much attention to that. So they mentioned about like using a well and other things, but they have gone. I think your present government is there. I hope they will look into it. These two issues, water and maybe the harvester. Mr. George Nathan was also there, and he said that they have visited India and they might bring a harvester that will harvest the sloping cane fields. So I hope you will consider that. That's all I have. Thank you. About the molasses. Molasses money is given to the farmers or using FSC? I might answer that question. The net proceeds is coming from the sale of the sugar and molasses, and it's distributed as per the master ward. So yes, farmers do receive the money for the molasses. Thank you. हमारे आईजी साहब और उनके साथीगण, हमारे कुछ विषय है दवाई के बारे में। जो दवाई ग्रोस काउंसिल बेच रहे हैं ग्लाइफोसेट, और वो हम किसान को बहुत महंगा में मिल रहे हैं। और जो पहले ग्लाइफोसाइट रहा लाल गालन, वो साउथ पैसिफिक फर्टिलाइज़र बेच रहे केस। हमें बहुत सुविधा था पहले सभी किसानों को, जबकि ग्रोस काउंसिल सप्लाई करता रहा जो ग्लाइफोसाइट दवाई है। तो हम चाहते हैं पहले की तरह फिर वो दवाई ग्रोस काउंसिल बेचे, और वो दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है जो लाल गालन है। थैंक यू। जो आपका सवाल था, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। शुगर केन ग्रोवर्स काउंसिल दवाई बेच नहीं रहा है। दवाई का बेचना साउथ पैसिफिक फर्टिलाइज़र का काम है। हम सिर्फ शुगर केन ग्रोवर्स काउंसिल से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए कि हमारे माध्यम से किसान के पास सरल में दवाई पहुँचे। दाम का विषय जो है, इसको लेकर जैसे जब इंपोर्ट किया जाता है किसी पदार्थ हमारे देश में, तब अलग समय पर अलग फ्रेट रेट रहता है, प्राइस विडिसाइड का दाम अलग रहता है। उसी कारण से समय समय से दाम चेंज होता है। वो भी हम नहीं निर्भर करते हैं, उसके लिए FCCC है जिससे FCCC से लियाइज करता है और किसी भी प्रोडक्ट है उसके दाम निर्धारित करता है। और रहा सवाल ग्लाइफोसाइट का, ग्लाइफोसाइट जो आप लोगों को जो फेयर ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है, इसके कंप्लायंस जारी रखने के लिए इसको बैन किया गया, क्योंकि उसमें एक पदार्थ ऐसा पाया गया
जो जिसका रेसिडुअल इफेक्ट रहता है और ह्यूमन बींग्स पर उसका इफेक्ट रहता है, उसी कारण उसको मार्केट से निकाला गया। धन्यवाद। सब दवाई पी के मर जाइए, जो पॉइजन वाला दवाई हो तो मर जावे करिए। I'd like to clarify one thing. एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो ग्लाइफोसाइट का बैन है, पैराकोट का बैन है, ये जो फेयर ट्रेड संस्था है, 3 संस्था है फिजी में, लंबासा केन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, लोटोका केन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, रारवाई पेनेंग केन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये तीनों संस्था के तरफ से मांग आया, सबमिशन आया शुगर इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल के पास। और कारण इसका यही था, जो ये तीनों संस्था इसके सर्टिफिकेशन जारी रखने के लिए जब ऑडिट हुआ, उसमें ये पाया गया कि इस जो 2 कमोडिटीज़ है, इसका रेसिडुअल इफेक्ट लास्ट ग्रेन ऑफ शुगर में रहता है, और जो मार्केट में बिकता है वहाँ पर चीनी वे लोग अंडर फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे। तो मांग आया, इसी कारण से शुगर इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल एफएससी और शुगर केन ग्रोस काउंसिल के कंसल्ट कर और ये प्रोडक्ट को बैन किया। ये हमारे तरफ से शुगर केन ग्रोस काउंसिल या एसपीएफ या एफएससी के तरफ से नहीं आया, ये जो किसान की 3 संस्था है, ये तीनों संस्था के ओर से ये मांग आया। हम 10 साल से हम सफरी मुसीबत में है, उसको जी 10 साल से इसे है कि हम गन्ना बोया, बट हमारा रास्ता अच्छा नहीं है, उसका रास्ता अच्छा नहीं है, गन्ना बोते और मतलब जोटे में लोरी है कि नहीं, वाला हमारा रास्ता है, बट उसमें कुछ ही है, कितना पत्थर सब कुछ छोड़ दिया है, बट रास्ता जो में लोड लेकर दब जाए, और उसके उसने ने मांग करी थी कि हमें आप लोगों कुछ मदद करो ताकि हम गन्ना निकाल सकी। 6 टन 7 टन गन्ना वहाँ से निकले है, तो फिर लोरी रहे चार्ज करे में एवरेज 10 टन एवरेज, और इससे जितना हमारा गन्ना नहीं हो उससे बेसी हम एवरेज भर दिए, तो फ़ायदा कुछ जी में गन्ना बोए। अभी भी कल हम पीएस के लगे फ़ोटो भेजा, सब पीएस के लगे सब फ़ोटो भेजा है, पीएस के दिखावा, पीएस हमें बताया रहा, पूर्व मायरा बता रहा बोले तुम्हें बोले रास्ता के बोले हम लोग बनाए करेगा, गरीबल भी छोड़ देगा ताकि तुम गन्ना निकाल सके, और हम कोशिश करते हैं बेसी गन्ना बोए के, वही हमारा मांग है कि हम 10 साल से दौड़ी थे, यहाँ जाए वहाँ जाए, तो हमें कुछ हो ही नहीं है। यहाँ पीएस आया रहा, पीएस से बताया, पीएस बोले तुम्हें हम मौका देगा बोले, ओके। और फिर हम जो कॉन्ट्रेक्टर अभी कल गरेरा चला था, उससे भी एक बताओ हमारा रास्ता के कुछ जो है, तो बोले नहीं तुम जाओ, बोले मिनिस्टर आई उससे बात करो, तब बोले हम लोग सके जाके बोले ग्रेडा चला के ग्रेबल छोड़े। फिर से विशेष धन्यवाद दे रहा हूं, और मैं जानता हूं कि समस्या बहुत है, ये सब कल नहीं सुलझेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ जो तुरंत की बात है वो आश्वासन मैं दे चुका हूं कि लोगों में जो झूठ साज फैलाया गया था कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा, ये कुछ नहीं जाएगा, और इसको हम और सुधारेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। सोशल वेलफेयर जैसे मैंने कहा वो बढ़ सकता है, कितना से बढ़ाएंगे अभी भी हम निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन कम नहीं होगा और हटेगा नहीं, ये गलत बकवास है। तो एक बार फिर आप लोगों को विशेष धन्यवाद, थैंक ऑल ऑफ यू, thank the government officials in Lebu for being part of it. I know there are a lot of issues, and I think as a government, you know, we will work together. You people are the eyes and ears of the government on the ground, and we
we have full confidence in our civil servants, people who are really the front line, who make sure that things happen. So I want to take that opportunity to thank all of you. Dhanyawad. Thank you.